Hi friends, good evening. I'm Dr. Ashutosh Gupta. For today, we're going to talk about Turner syndrome and Turner phenotype. Okay, so the main pathognomic feature for a Turner syndrome is a cystic hygroma, right? So I'm not getting into what classifies it to be cystic hygroma, but cystic hygroma is a radiological diagnosis. So and then they usually it presents at 12 weeks or so. So it is a diagnosis that is usually not being missed, right? So Turner syndrome, cystic hygroma are almost the same thing across. And then if you talk about allelic disorders या टर्नर फिनोटाइप, तो उसमें क्या होता है कि इंक्रीज न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी हमको मिल सकती है, एंड देन वी कैन हैव sort of an pleural effusion on ascites, and therefore it could be a Turner phenotype. So and then we can have like if the baby passes on, and then at level 2 we identify that the baby is having some issues with the kidney, right, specifically in horseshoe kidney and short long bones, and therefore we can imagine, or we can put a differential diagnosis of a Turner phenotype, type of a Turner phenotype in the background, right. uh, तो सिस्टिक हाइग्रोमा एक बहुत ही पैथोग्नोमिक फाइंडिंग है जो कि 12 हफ्ते में डायग्नोसिस का बन जाता है। इंक्रीज न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी में हमको ऐसा लगता है कि वी कैन डू सम जेनेटिक इवैल्यूएशन सो एज टू आइडेंटिफाई, और क्लिनिकल जेनेटिकली एक डिफरेंट syndrome called as Noonan syndrome might present as a increased nuclear translucency plus ascites or pleural effusion. Third, if the baby passes on from the 12 weeks to 16 weeks ultrasound, and at 18 weeks, and the baby reaches to 18 weeks, and then we identify that there is an horseshoe kidney, right? कोऑक्टेशन ऑफ aorta बहुत क्लासिकल होता है, मेनी टाइम्स इट गेट्स मिस्ड, बट हॉर्शू किडनी के साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी के जो लिम्स हैं वो शॉर्ट हैं, तो हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक्सपी डिलीशन है, मतलब ये टर्नर फिनोटाइप है, राइट। सो लेट अस फर्स्ट सी दी स्लाइड्स एंड देन विल टॉक अबाउट। सो दिस इज द फर्स्ट स्कैन, 12 हफ्ते 2 दिन का की प्रेगनेंसी है। इसको ध्यान से देखिए तो आपको पता चल रहा है कि सिस्टिक हाइग्रोमा है, राइट। सो दिस इज अ वेरी टिपिकल एंड क्लासिकल फॉर ए सिस्टिक हाइग्रोमा फॉर ए टर्नर सिंड्रोम, right. And this is the second one, so we can identify कि mild pleural and an ascites is there. This is also 12 weeks, so increased nuchal translucency, so it doesn't fit into a classical cystic Turner syndrome or cystic hygroma, right. So there is something more that probably we need to see, and this could be Noonan's, right. And so classical Turner syndrome के जो clinical findings होते हैं वो basically cystic hygroma है, and then we can have coarctation of aorta, cardiac findings and all those stuff, right. Noonan's एक रेसोपैथी है, जेनेटिक सिंड्रोम है, राइट, और उसके क्लिनिकल फीचर्स में ऐसा लगता है कि इंक्रीज न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, एंड वी कैन हैव एन ascites and pleural effusion plus cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy and pulmonary stenosis. Now XP deletion, this is also could be a Turner phenotype. तो इसकी जो की फाइंडिंग्स है वो हॉर्शू किडनी है और शॉर्ट लॉन्ग बोन्स है, right. So if this is how we differentiate between the Turner, Noonan's and an XP deletion, right. देखिए क्लिनिकल सिनेरियो में वी नीड टू बी pragmatic, right. So you we try to make the diagnosis mostly on ultrasound, non-invasive. When we required, we need to put the needle and do some genetic diagnosis. So let us cut across these three differential diagnoses in one go. सिस्टिक हाइग्रोमा 12 हफ्ते में पता चलेगी, और वो सिस्टिक हाइग्रोमा है, और उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी है, डेफिनेटली हमको कार्डियक एवेल्युएशन कर सकते हैं। हमको डाउन सिंड्रोम रूल आउट करना है, जिसमें हम जो टिपिकल डाउन सिंड्रोम के लिए ABSD या कोई और डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कार्डियक मेलफॉर्मेशन के लिए, वो डिफरेंट है। बट विद दिस इंक्रीज न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी वी सी दैट वी आर हैविंग सम प्लूरल और नेसाइटिस, and then our sort of a differential diagnosis or probably provisional diagnosis is for a Noonan syndrome, right. And if the baby passes on through this 12 weeks and 15, 16 weeks, and the baby is absolutely good, and then at 19 weeks or 20 weeks time of level 2 we identify it as an horseshoe kidney, plus the long bones are slightly short, so this could be that you getting my point. So probably it makes more sense that we do the amniocentesis and an array so as to see for an XP deletion, because XP deletion can behave like a Turner phenotype. So they would be milder, but they can have a Turner phenotype, right?
So that is how it is. So how do you differentiate between the Turner's, Noonan's, and a XP deletion or a Turner phenotype? Right? Thank you very much for your patience.